Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Sheen Azhar Shirazi, Head of Education Department, Singh, your host for this webinar. With me here, I have Mudassir Ramzan, the Deputy Head of External Affairs, Department, Singh. And on behalf of the entire Singh Cabinet, we would like to welcome all of you to this PLAB MRCS webinar series. Let's start the webinar officially with the recitation of the Holy Quran, for which I would like to call upon Javeria Shafiq. Over to you, Javeria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم. Jazakallah, Javeria. Education Department at Singh has been a forerunner in bringing guidance and awareness to the medicos that are diligently exerting themselves in their course of studies. It is our belief that timely information can save the students from a lot of unnecessary hassle and make them divert them full attention towards things which will provide them with a greater output. To that extent, our education department has been committed to conducting various seminars for both FSC, pre-medical students, as well as the respected years of MBBS, so we can play our part in their professional journey. Education department, Singh, our president, our managing director, our chairman, and all the members that have been working with Singh in these last 3-4 years. I'm really thankful for you all, because without you, it wouldn't have been possible. So what is the purpose and objective of this series and this guidance session? Many of us come to the MBBS and without knowing what we should be doing after these 5 years, or what we should be focusing on during these 5 years, and what would be beneficial for us in the near future, down our path towards our career. Think organized this webinar in order to provide a platform for the medical students to learn a little about their future aspects and post-graduations. Having conducted a solo PLAB session in the past, the link of which we will be provided in the comments below, this session will focus more on MRCS, but to make it worth your time, vital questions regarding PLAB will also be addressed. We are really grateful to our speakers for taking time out of their busy routine and coming here today to help us down this path where we are providing guidance to our juniors. With us today, we have Dr. Muhammad Usman, who is final year student in general surgery in Rahim Yar Khan. He has achieved the highest marks in MRCS Part 1 in 2021. He has scheduled a surgery ahead, so he will be leaving us at around 10:30, and then we will further continue our session with the PLAB questions and their answers. And also with us, we have Dr. Muhammad Iqbal Anwar, who has graduated from KIMU in 2017 and has passed his PLAB 2 in 2021. So looking towards MRCS, we are really glad to have you here today with us, Dr. Usman. Tell us a bit about MRCS. What is it really? And the testing pattern. Where do you see yourself after clearing both the parts? Over to you, Dr. Usman. Thank you so much, Dr. Shirin, for inviting me on. First of all, I will give you a brief introduction about the MRCS. MRCS is basically a membership Royal College of Surgeons exam taken by the 4 Royal Colleges of UK and Ireland. So basically, in order to pursue your specialized training in UK and Ireland, you have to pass this exam.
This exam has two parts, MRCS Part A and Part B. In Part A, you will get the theoretical part like from the applied basic sciences and the clinical part from the surgery and its allied specialties. Second thing, in Part B, you will get an OSCE type exam containing of 13 to 14 stations. So that's a little brief introduction about the MRCS. After passing MRCS, you have to give your OET and get yourself registered from GMC, that is General Medical Council of UK. So that's the further procedure after doing the MRCS exam. Okay, thank you so much, Dr. Usman. Now let's talk about PLAB, shall we? Bilal bhai, enlighten us about what exactly is PLAB and how and when we should attempt it. Bilal bhai, आप unmute कर लो. Sorry, Assalamu alaikum. Thank you everyone for having me here. I'm here to discuss about PLAB exam. PLAB exam is more a basic exam actually to start your career in UK. Actually, it's a science exam where in which they assess your linguistic skills as well as clinical skills as well. So, like any other, it also consists of two parts. One is about the theory, your basic knowledge of the 5 years of MBBS, and it's called as PLAB 1. And the other part is PLAB 2, which you can take in UK, and it is more about your clinical skills and how you manage patients and how you deal with them. And how you like compose yourself in emergency situations. It's all about that. So after clearing your exam, you can apply for GMC, and after GMC, you can apply for jobs or training programs, anything you want. Thank you. Okay. Thank you so much. Now that we have the basic rundown of what MRCS and PLAB are, let's get into a little more detail with our question answer session. We had asked you guys to send in the questions that you had, and you guys gave us such a massive response. I'm really thankful for that. And so it wouldn't be possible for us to discuss all of the questions, but we will really try our best to answer as many as possible. So Dr. Usman, my first question to you is, tell us a bit about OET and IELTS. So basically, OET and IELTS are the linguistic exam that you have to pass before getting your GMC registration done. So anyone who is taking PLAB, in PLAB, you have to give your OET or IELTS exam before taking the PLAB exam. But in MRCS, you don't have to take an OET or IELTS exam before appearing in your MRCS exam. Simple is that first of all, you have to clear your MRCS Part A and Part B. And after that, you have to pass your OET or IELTS exam to get yourself registered from GMC. So OET is much easier than the IELTS one because OET is more medical related exam. Like in that, you will be assessed same as like in IELTS, like you will be assessed through your learning part, your writing, your speaking, and these 4 parts. So it's same as that of IELTS, but the difference is that in IELTS you will be assessed generally in English subject, but in OET you will be assessed in like through a medical manner, through medical cases, and in this way you will be assessed in OET. Okay. So what is the basic difference between MRCP, MRCS, MRCGP, Dr. Usman? If you want to pursue your career in surgery in UK and Ireland, you have to go through the MRCS part because it's the membership of Royal College of Surgeons. And if you have to pursue your career in medicine or internal medicine or its specialties, you have to give MRCP, which is basically membership of Royal College of Physicians.
And MRCGP is basically membership of Royal College of General Physicians. So basically, if you want to pursue your career in surgery, you have to give MRCS. If you have to pursue your career in medicine, internal medicine, or its specialties, you have to give MRCP. And if you have to pursue your career in family medicine or like general practitioner in UK, you have to pursue MRCGP. So this is the basic difference between all these three memberships. Okay. So what are the different routes through which we can join GMC, NHS, like institutions? What is the criteria? What time should we like opt for it? So basically, you have two routes. First route is just after your house job, like you have to clear the OET, and after that you have to give your PLAB exam. After giving your PLAB exam, you will take your GMC registration from UK. After that, you will apply for an NHS job. First route is this. Second, like as Dr. Bilal is doing, like he has passed his PLAB 2 exam, now he will apply for an NHS job. Second route is that you will clear your MRCS or MRCP or even MRCGP. After that, you will give your OET exam and get yourself registered from GMC and enter the specialized training program there. So basically, after clearing PLAB, if you want to pursue your career in surgery or in medicine in UK, you still have to clear your MRCS and MRCP. So MRCS or MRCP is a much bit higher exam than the PLAB exam. PLAB exam is just a license exam which you have to clear before starting your medical career in UK. If you pass your MRCS exam, then your PLAB will be exempted and you will pursue your future career as a specialized training in UK and Ireland. So that's the basic two routes which you can opt for to pursue your career in UK and Ireland. Okay. So as medical students are always looking for like the helping books or the helping material. So what is it for MRCS? So basically MRCS, there is a hype about MRCS exam that MRCS exam is very tough, the passing rate is very low because most of the students are postgraduate residents are in their specialized training in their country. So basically they don't get enough time to prepare for this exam. But honestly, this exam is not that much hard like people usually think about that. So basically, you have to be smart while doing preparation for this exam. You have multiple study materials. You can go for them. The study material I used was EMRCS question bank, which I got an online subscription. And along with that, I did last 5 years recalls and FOSIA sheet MCQs. These are the basic three study materials which I used. I didn't study any textbook specifically for this MRCS. I joined an online course from an Egyptian mentor, Dr. Ida Harbe, just 3 months before my exam. And I followed his schedule, like the past paper schedule and the question posting schedules by him. So that was really helpful during my preparation. So basically, if we do it in a nutshell, you have to do EMRCS question bank, last 5 year recalls, and 300 MCQs from FOSIA sheet. These are the all study materials you have to require to pass this exam. Okay. So if we have cleared MRCP, and can we pursue either in like surgery or in medicine, or is there a compulsion for the foreign students to only choose one field? Like, is there a compulsion, or we can choose what we want to? No, you can go to the field of your choice. There is no compulsion. But if you are doing an MRCS, you can't go into internal medicine. That's obvious. Like if you are giving MRCP, you can't get into a surgery or its allied. So if you have to pursue your career in surgery and allied, you have to give MRCS. And there is no obligation like that is like you have an obligation in US
and that according to merit you can go in internal medicine or neurology or whatever. But in UK, all the fields are open for you. You will apply in different NHS posts, NHS jobs, and according to your merit, you will get that job or you will not get your job. So that's simple. Okay, Dr. Usman, आपने तो मतलब first time में मतलब you got highest marks and everything. कुछ students हम जैसे भी होते हैं. So I need to ask you कि how many times can we like attempt MRCS or MRCP exams? Like You can attempt MRCS exam like 5 times. You have to clear your exam in 5 attempts. If you fail to do that, you can't get a chance, 6-time chance to appear in that exam. And even after passing your MRCS Part A exam, you have 4 attempts to clear your MRCS Part B. If you can't do that in your 4th attempt, you never get a 5th attempt to clear your exam. So one should keep this in mind, that never appear in this exam prematurely. Appear in this exam with your full strength and with full preparation. okay. So what is the financial burden of MRCS? What do you expect to earn after MRCS? And how much does FCPS pay here? You can answer that, obviously. The financial cost of MRCS Part A is like 1,25,000 Pakistani rupees, and with all the study material that you will subscribe online, you should keep in mind it lies between 1,50,000 to 2 lakhs. After that, for Part B exam, you have to pay between 2 lakhs for the exam fee, and for the visa processing fee, and for all that you obviously you have to go abroad for taking the exam. You have to keep in mind 5 to 6 lakh for Part B. After that, it varies according to your nature of job that you will get in UK. Like if you get a non-training post, you will get paid like 2,000 to 3,000 pounds per month with tax deduction. And if you get a training post, you will get 3,000 to 4,000 UK pounds, which is pretty much higher than in Pakistan. Like in Pakistan, I am a final year resident of FCPS, and I am getting here 1 lakh per month. So you will get a handsome pay in UK and Ireland, which is not that much good. Like Pakistani pay is not that much good when you are comparing it with your UK salary or your stipend there. सही. So हम लोग आपको स्ट्रीट लेने नहीं आ सकते रहीम यार खान, आप ये कह रहे हैं आपके हाईएस्ट मार्क्स के हम ट्रीट लेने नहीं आ सकते. Okay, so tell us a bit about FCPS and the central induction policy. Tell us a bit about FCPS and the central induction policy for the new medicos watching us. We have seen some students attempting FCPS 1 as a backup. Would you recommend it? I don't advise to the new medical students that they shouldn't keep FCPS Part 1 as their backup. They should give their primary focus to the FCPS, because you don't know the status, like when you will go to UK, when you will go to abroad. Like I have to appear in the July attempt for MRCS Part B, but due to restrictions of visa, I can't go in July. And still I have to stay here till next diet or attempt. So one shouldn't keep the FCPS as a backup plan. You should keep FCPS as your prime focus in Pakistan if you want to stay in Pakistan. So after completing your house job, you can appear in your FCPS Part 1. Like if you have to go to medicine, you have to appear in FCPS Part 1 in medicine. If you want to pursue your career in surgery and allied, you have to give FCPS Part 1 in surgery. So one should clear his or her FCPS Part 1 as early as possible after completing his or her house job. After that, you have to do primary and secondary health care service for getting your merit improved in Pakistan. So central induction policy is going bit tougher day by day. Like when I appeared in central induction policy in 2017,
the merit was very low as compared to the latest merit. Like I got inducted in general surgery by a merit of 55%. Now, even if you have 70% as a cumulative score, you can't even get a training in FCPS general surgery. So, but you shouldn't lose hope that you can't get a job in Pakistan. You will definitely get a job in Pakistan, but you should be patient for getting job in Pakistan. So my advice to new medical students is that you should keep FCPS as your prime focus if you want to stay in Pakistan. If you don't want to stay in Pakistan, just go for MRCS directly or go to PLAB directly. Then don't waste your time on FCPS here in Pakistan. Okay. So what is the duration of FCPS in Pakistan? And is there any difference of duration of specialization in UK if you go after MBBS or FCPS? The training duration is different between Pakistan and UK. Like you take an example of general surgery. If you want to do FCPS general surgery in Pakistan, the training period is of 4 years. But in UK, the training period is of 8 years. So if I have to go after my FCPS towards UK, I have to complete further 4 to 5 years in general surgery there before appearing in FRCS exam in UK. So the basic difference is the timing duration between Pakistan and UK, plus the hands-on here is much earlier than comparatively to the UK. Like here in Pakistan, you will get hands-on during your first year or second year of your training. Even during your house job, you will get an hands-on on appendicectomy or like such minor procedures. But in UK, you have to wait for 4 or 5 years to get an hands-on under direct supervision. So that's a much big difference between Pakistan and UK. So what kind of exams do we have to give there when we go to UK for MRCS? Sorry? What kind of exams are waiting for us there if we go for MRCS there? What's the difference like FCPS and MRCS? When you will clear your MRCS exam and get GMC registered, you will apply for a surgical registrar post in UK. In different hospitals, post will be available for general surgery or its allied. So after applying there, your CV will be assessed. You will have to require some LORs there, letter of recommendations there. After getting that, you will be inshallah get a job there, and after that you have to complete 4 or 5 years of training period. After completing your 4 or 5 years of training period, you will have to appear in your FRCS exam, which is basically Fellowship of Royal College of Surgeons exam. After clearing that, you will be a consultant in UK and Ireland. So that doesn't mean after clearing your MRCS, you will directly become a consultant there. You still have to complete your training there. And after completing your training, you have to appear in the fellowship exam of UK and Ireland. After that, you will be eligible to apply for a consultant post there. Okay. So can every student like me or like most of us medical students can pass MRCS? Is that like easy? You told us it's not difficult, but can every student pass it? Yes, it's not that much difficult if you keep studying for 4 to 6 months. Like you have to give 6 to 8 hours daily till your exam, and if you are consistent with your preparation, you can easily go through this exam, because the passing marks for this exam is just 71 to 72%. Most of the people lose hope, or not consistent with their preparation because of the content, because you have to study the basic sciences along with the clinical surgery and its allied part. So most of the people start preparation, and meanwhile during their course they left the preparation because they took it as burden, like there is a
huge content or like this, but if you remain consistent with your preparation, you can easily do that. Okay, okay. So, Dr. Bilal, Dr. Usman, thank you so much for your time. And these were the questions we had with us. And Mudassir, do you have any questions? Dr. Usman, हम आपको नहीं रोकेंगे because you have a surgery scheduled ahead. Yeah, thank you. So definitely so we much. wouldn't stop you. Definitely, this was a very good time with you. We had a really good time. And thank you so much for your Thank you. presence here, for your time. Thank you so much. Thank you so much. So guys, now turning over to the PLAB session, we have with us Dr. Bilal, as I already told you. He is working Sangla Hill these days. So Dr. Bilal, can you tell us what is the journal procedure for applying for PLAB? Like every exam, like Dr. Usman just told you that before appearing in PLAB exam, you need to pass your OET or IELTS. After clearing your exam, you need to put your results in the GMC website. You can make your GMC account any day without IELTS or OET exam. But to get PLAB 1 seat, you need your English language test results. After that, you can go apply 1 seat. But right now, because of this COVID situation, actually it's difficult to find PLAB 1 seat at the moment. So after getting PLAB 1 exam, after going through your PLAB 1 exam, you can again book PLAB 2, and that's after that you can apply for GMC. It's really simple. It's not that difficult. Okay. So what sort of helping material would you recommend for PLAB? Sorry, I couldn't listen. So what sort of helping material would you recommend for PLAB? Actually, first of all, I want to clear that PLAB is not a difficult exam. It's one of the easiest exam you're going to sit in your life. And it's pretty much basic knowledge, which you can learn in your 5-year MBBS. For PLAB, what I did was I read PLABable. It's an online questions, pretty much like UWord. So in PLABable, there are almost like 22 to 2300 questions with explanation, and you can go through them all. It contains all sort of subjects like general surgery, urology, nephrology, medicine, gastroenterology. It contains all the subjects you need to study for your PLAB exam. There are certain other things like right now people are also going for PLAB 1 keynotes, but I didn't read them because they were not available at my time. And there is a myth about 700 questions by Dr. Khalid. They're pretty much outdated. So I won't recommend those questions now because they are not up to date, and people find it difficult to attempt few questions which will come in PLAB exam. So I would recommend PLABable only. I had read the PLABable for 3 times, and I think I scored pretty good score. Are published research paper important for the application process? Do we need electives? It's actually experience is can be helpful in any application you're applying in UK. So yes, if you have some NHS experience, it is going to be a plus point for you in your CV, and it will be easy for you to get a job. But if you don't have any elective or any NHS experience, you can get a job, but it will take time, like 3 or 4 months. And for the research paper, yes, it is a plus point as well. Right now, I'm working on a research paper as well to make my CV a bit stronger. So yeah, both are necessary. If you can do that, you should do that. Dr. Bilal, kindly can you adjust your mic a bit? We can't hear you very properly. That kindly थोड़ा सा आप इसको सही कर लें. Thank you so much. Yeah, it's better. I guess it's better. So what is the process after PLAB 2?
after PLAB 2, actually you need to get your MBBS degree verified first for applying for GMC registration. There is a site which is known as ECFMG. There is it's an American body which verifies your MBBS diploma for you. It costs around $230 on average. And after that, after getting your degree verification, you can apply for GMC registration through your GMC account. In your GMC registration, you need personal details, your passport details, your academic details, and your employment history. After that, they ask for a few documents like your house job experience, your degree, and your passport. That's all. After 2 or 3 weeks after applying for GMC registration, you get GMC registration. Okay. So should we plan our house job rotation if we want to give PLAB 1 while doing house job? It's a really good question. Actually, it was people used to do this before in the past because PLAB 1 seats were available easily. But like just I told you before, right now it's pretty difficult to get PLAB 1 seat. And one other thing is that due to COVID, the major rotations are not that much hectic as now. So you can get prepared very easily in any rotation you want to prepare for the PLAB 1 exam. But if in your future, if the things get better and PLAB seats are available more frequently, then I would recommend that you should go for minor surgeries near your PLAB 1 exam, because it will give you ample time to go through all the PLABable questions, and it will help you in your revision. So yes, you can schedule your minor and major rotations according to your exam. Dr. Bilal, kindly आपका mic आप adjust कर लें. We can't hear you really properly. Sorry. Okay. Yeah, now it's better. Yeah, now it's better. I should keep it here, I think. Yeah, please do that. So does the MBBS marks, distinctions, or marks, the percentage, it matters while doing PLAB? Please say no. Actually, I don't have any distinction as well. So that's good. Actually, they asked about the distinctions in your CV, job application, but for your GMC registration, it's not necessary. The good thing in PLAB is that they don't look for your exam results. Like if you have passed your exam, then it's okay. If you are passing on average marks, it's okay with them. If you're getting like highest marks, they are not going to bother with that. Okay. They are going to give you GMC registration, and you are good to go for your job applications. But after the session, I'm applying for PLAB, obviously. So Dr. Bilal, sorry. It's pretty easy exam, but you need to finish your final year first, I think. Oh, I have to wait for a year. Yeah. Okay. So, कितनी हमारी cost लग जाती है, कितने पैसे हमारे लग जाते हैं फिर doing the PLAB और पूरा जो process होता है overall? How much amount do we have to save? The cost it's pretty much equal to the MRCS exam, which Dr. Usman was telling you about. Like PLAB 1 is around 50,000 rupees Pakistani, and PLAB 2's fees is actually I think 2 lakh rupees in Pakistani rupees. And for your visit to UK, you need almost like 7 to 8 lakhs. So it's about 1 to 1.2 million on average. You need to have that much cash in your account. Okay. Over to you, Mudassir. अच्छा, तो जैसे मतलब कि आप एक नए मुल्क में जा रहे हो, आप रहना आपके लिए डिफरेंट होता है, तो how soon one shift to the UK with parents after clearing PLAB? After getting the job, you can like call your parents to UK. They can visit you, but it can only be on visitor visa.
Okay, and visitor visas are of different duration. Like you can get a visitor visa for 6 months to 10 years, but on each visit you can't like stay for more than 6 months. After 6 months, your family need to go back to Pakistan, and then they can come again for 6 months more. But they can't get a permanent visa, visa or anything. And in case of if you're calling your spouse over to UK, it's a different visa, and she or he can live with you much longer. Oh, that's good. That's good. So can we pursue either surgery or medicine after clearing PLAB? या इस Yep. पे कुछ है कि No. PLAB is just a basic license exam. Like just the in Pakistan, foreign graduates give a PMDC exam, and after that they can pursue anything they want. It's just like that. It's just a license exam. And after that, I'm going to appear in MRCP exam in near future because I want to pursue my career in medicine. So after clearing your PLAB exam, you can choose any field you want. If you want to go to like GP surgery, you can give MRCGP. If you want to go to surgery, you can give MRCS. And for people like me, they can always go for MRCP. One more thing I would like to add here is that MRCP exam is a pretty basic exam. And it's actually good to pass your MRCP exam before getting a job. Like if you have passed your MRCP exam, then it will be a plus point in your CV, and it will get you a better job. तो डॉक्टर बिलाल, अगर हम लोगों ने बाद में MRCS या MRCP ही करना है तो हम लोगों को प्लैब करने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है कि हम प्लैब करें पहले और फिर हम MRCS करें? Actually, MRCP or MRCS is a longer route. Okay. Okay. Actually, I'm sitting here in 2021 after graduating in 2018 is because of COVID. Because I think COVID has taken my 1 year to get appear in PLAB 2 exam. So PLAB is a pretty quick way to go to UK, and by doing PLAB you can get a foundation year experience in UK, which is very necessary, I think, to get you can get used to their conditions and their way of managing their patient. So I think PLAB is an easy and quick way to go to UK. Okay, so I've been hearing a lot of news about UKMLE replacing the PLAB. So what is it? It's What's actually the UK. difference? It's actually UKMLA. Okay. United Kingdom Medical License Assessment. Okay. Assessment. Okay. Yeah. So it's going to replace PLAB exam in 2024, like just at the start of 2024. Okay. Okay. At the end of 2023. Yeah, by the end of 2023, you can appear in PLAB exam, but after that, they are going to change it to UKMLA. But there will not be much difference between the two exams. Like PLAB, UKMLA will consist of 2 parts. The first part will be of your general knowledge, the basic knowledge you have. And the second part is just like PLAB 2. They will assess your clinical skills, your way to deal the patient, and your interpersonal skills. That's all. There's no much difference. Okay, Mudassir have a question in his plate. Let's see what is it. What is it, Mudassir? अच्छा, तो जैसे MLE के लिए जो है स्टूडेंट्स अपने 4th ईयर में 3rd ईयर में प्रिपरेशन शुरू करते हैं, मोस्टली फाइनल ईयर में भी लगे होते हैं, तो क्या PLAB के लिए भी हम मतलब प्रिपरेशन शुरू करते हैं थोड़ी सी OET या IELTS के लिए, या कुछ इस तरह स्टफ देखना शुरू करते हैं कि हम पहले अपने मतलब बेसिक MBBS पे फोकस करें और उसके बाद हम जॉब पे जाके देखें कि हमने PLAB के लिए क्या पढ़ना है? I think for PLAB exam, you can always start after your final year examination. You should focus on your studies first, and on the subjects you are going to take going for in final year exam. So there's no need to rush for PLAB exam. Like OET takes around 1 to 2 months for preparation.
And after that, PLAB 1 exam takes around 3 months. If you want to go through the PLABable 2 or 3 times, and after that, PLAB 2 exam takes like 2 months. So it will take around 8 to 9 months, less than a year, to get your GMC registration. So I don't think you need to rush for PLAB exam in your MBBS. You can always start after your graduation. Okay, so Dr. Uh, Bilal, yeah, sorry, Vidasi, you can continue. Over to you. Over to you. Okay, so what differences do you see, Dr. Bilal, between USMLE, PLAB, and MRCP? And kindly explain it to me. MRCP and MRCS, are they the same things? What is the difference? MRCP is for the students who are going to pursue their career in medicine. Okay. So And it's MRCS? is for surgeons. Like it's Okay. right in the name, like membership of Royal College of Physicians, MRCP, Okay. and MRCS is a membership of Royal College of Surgeons. Okay. Okay. So if Sure. you are taking MRCP exam, you can only pursue internal medicine. Okay. Okay. And after, if you're pursuing MRCS, then you can, like Dr. Usman, he can pursue his career in surgery. But in UK, like USA, it's a bit difficult to get training in surgery because there's a tough competition for surgery. But you can get seat in medicine easily. So most people go for MRCP, and after that they go for training in internal medicine. Okay. So PLAB हमारा किस टाइम पे हम लोग इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं, कब इनरोल करवा सकते हैं, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, और हमें पैसे कितने मिलते हैं once we have passed our PLAB 2? अच्छा, PLAB 2 के बाद अभी तक मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला। ठीक है। Okay. तो चांसेस क्या है कि हम कितनी पे अर्न कर सकते हैं? Around 2,000 to 3,000 pounds. So how much is it like in at your first Pakistani? job? It's about 4 to 5 lakhs. 4 to 5 lakhs. Okay. Okay. So हम लोग किस टाइम में अप्लाई कर सकते हैं PLAB के लिए? साल में कौन सा टाइम सूटेबल होता है? PLAB साल में 4 दफा होता है, PLAB 1. Okay. मार्च, जून, सितंबर और नवंबर. ठीक है. तो जब भी आप अपने रोटेशंस को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहें, उसके मुताबिक आप अपना मतलब PLAB एग्जाम, जब माइनर रोटेशन हो, उसके जो नियर मोस्ट PLAB 1 एग्जाम हो, आप वो बुक कर सकते हैं. लेकिन ये लग्जरी थी पहले स्टूडेंट्स के लिए. मैंने पहले बता चुका हूँ कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब सीट्स नहीं अवेलेबल. ठीक है. तो इसलिए ये लग्जरी ख़त्म हो चुकी है, और जब भी सीट मिल जाए फौरन उठा ले, मैं यही कहूँगा. सही है. So are seats for the foreign students being limited? मतलब foreigners के साथ कोई discrimination हो रही है, नहीं हो रही regarding PLABs? What do you see? Like, what do you say? Actually, I have not entered in their system yet, so I don't know much about it. But as far as I know, they don't discriminate you just because of your race or your nationality. They just judge you according to your academic record and your clinical skills. That's all. तो seats कुछ हैं limited foreigners के लिए या नहीं? Limitations कोई नहीं है. Whoever scores marks, whoever wants to. उन्होंने सिंपल एक जो उन्होंने तरीका रखा है वो ये है कि पाकिस्तान में हम लोग, जैसे अब मैं एमओशिप कर रहा हूँ, तो मैं मेडिसिन में एमओशिप कर रहा हूँ. अगर यही एमओशिप मैं सर्जरी में कर रहा होता तो फिर वो आपको देते हैं 24 मंथ्स. अगर 24 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास पाकिस्तान में है तो you can't apply for you can apply for training but you can't apply for consultantship. Okay. तो ये थोड़ा सा वो करते हैं, तो इसलिए उनके जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इस बात का एज मिल जाता है सर्जरी में, मेडिसिन में नहीं. Okay. So are published research papers important? Do they play any role? मतलब कोई फायदा है पेपर्स पब्लिश करवाने का? बिल्कुल है. और ये है कि अच्छी जगह पे, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन ये है कि वेल नोन जो है बॉडीज वहाँ पे, पैसे नहीं. जी. अच्छा, तो ये था कि अभी जो PLAB 1 की सीट्स ओपन हुई हैं, तो मेरे मतलब सीनियर से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि आप अपने माइंड में रखो कि आपने PLAB 1 जो है ना जाके दुबई में देना है. मतलब अभी जो लास्ट टाइम पाकिस्तान में सीट्स ओपन हुई हैं तो विद इन सेकंड्स कह रहे हैं सारी PLAB की सीट्स बुक हो गई थी.
तो क्या हम भी अपने माइंड में रखें कि हमने प्लान 1 भी जाके दुबई भी देना? देखिए, मैं तो कहूँगा जहाँ भी मिलता है वहाँ दे दें, ठीक है। तो मतलब लोग श्रीलंका पे जाते हैं, सिंगापुर भी जाते हैं, ठीक है, दुबई भी जाते हैं। तो जहाँ भी अवेलेबल हो सके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका टाइम है, ठीक है। वो अगर आप ज़ाया कर रहे हो तो वो मतलब जितने भी पैसे लगेंगे वो बाद में आप यूके में जाके वापस ले लो, ठीक है। लेकिन टाइम जितना आप ज़ाया कर रहे हो वो आपका ज़ाया होना है, वो आपको किसी ने वापस नहीं करना। तो इसलिए जहाँ भी मिले सीट आपको ले लेनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो ओईटी उस का भी मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी दे सकते हो फाइनल ईयर के फौरन बाद। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल है कि जैसे डॉक्टर उस्मान बता रहे थे कि एमआरसीएस के लिए आपके अटैम्प्ट्स होती हैं, इतनी अटैम्प्ट्स के बाद आप नहीं दे सकते। ओईटी या प्लैब के लिए अटैम्प्ट्स नहीं होती, कोई इसके लिए टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। Okay, टाइम okay, ड्यूरेशन होता okay, है, मतलब after passing your OET you need to get yourself registered in 2 years. okay, Okay. If you don't get your registration in 2 years, then you need to appear in OET or IELTS exam again. okay, Okay. And similarly for PLAB 1, you need to pass your PLAB 2 exam in 2 years after passing your PLAB 1 exam. But right now, GMC has increased this time limit to 3 years because of the COVID situation, and people are not getting seats of PLAB 2. So now for PLAB, after PLAB 1, the time limit is 3 years, but for OET or IELTS, it's again 2 years. There's no change in time limit. okay. डॉक्टर बिलाल, ये आप कोरोना से स्ट्राइकन होने की वजह से कह रहे हैं कि हम कहीं भी दे दें ब्लैब, या नॉर्मली भी ऐसा ही होता है? एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि पहले तो सीट्स अवेलेबल थी। Okay, मेरे केस में जिस दिन मेरा ओईटी का रिजल्ट आया उसी दिन मुझे प्लाई 1 की सीट भी मिल गई। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आजकल सीट्स आप अभी तो आप नहीं देख सकते, लेकिन जीएमसी अकाउंट सब बना लें, उसमें कोई मतलब चीज़ नहीं आपसे मांगते, सिर्फ जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए अपना। हाँ, लेकिन okay, प्लाई 1 की सीट्स देखने के लिए आपको आपका ओईटी या आईएलटीएस का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो वो और उसके लिए कह रहे हैं, सॉरी, उसके लिए वो कहते हैं कि आपको एमबीबीएस की भी डिग्री चाहिए होती है, मतलब आपको फाइनल ईयर की भी, या ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए? मैंने हाउस जॉब में शायद बनाया था, और मेरा नहीं ख्याल था मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री थी। लेकिन ये है कि आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। आप और उसके बाद आप मतलब अभी तो आपके पास आईएलटीएस में ओईटी का रिजल्ट ही नहीं है, तो इसलिए आपको फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको प्लाई 1 की सीट ही नहीं शो होंगी, ठीक है। जब आप आईएलटीएस या ओईटी की सीट्स देख लो, मतलब पास कर लोगे, उसके बाद अपना जब अकाउंट बनाओगे तो तब प्लाई 1 की सीट। पहले ये होता था कि वो हर टाइम जब भी आप जीएमसी साइट खोलोगे प्लाई 1 की सीट आपको सामने मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब उन्होंने टाइम रख दिया कि हर 3 से 4 माह बाद वो सीट्स ओपन करते हैं, और जितना मतलब आपको खुद कह रहे हो कि 2 या 3 मिनट में या 5 से 6 मिनट में सीट्स निकल जाती हैं, तो ये हो रहा है। तो इसलिए वो अब okay. सीट्स उस तरह अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर बिलाल, जो हम वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं अभी तक, तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि अल्लाह पाक राजी होंगे। तो आप हमें ये बताएं कि इसका हमें प्लैब में कोई फायदा है कि हम ये वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं जितने भी? इसलिए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हाँ, मतलब वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स आफ्टर दिस इंशाल्लाह। like you can show this in your team management. You can also show it in your management skills. Okay. You can also show it in your teaching section, like ओके, you ओके। try to teach your fellow students. So it's a good point to have. मतलब मैं अपनी सारी वीडियोस के लिंक्स भेज दूं उन्हें कि हाँ मैंने जी, बहुत काम किया है? बस हाँ ठीक जी, है, मैं अभी ले रही हूँ ये फेसबुक से। जी। अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये बताएं कि हम लोगों को प्लैब के लिए हाउस जॉब करनी जरूरी होती है, कि मतलब हाउस जी, जॉब हमारी हो चुकी हो? इसके भी दो तरीके हैं। अब यह है कि यूके में FY1 और FY2 2 इयर्स होते हैं जो इंटर्नशिप के होते हैं। पाकिस्तान में 1 साल है। तो हम लोग ये करते हैं कि हम हाउस जॉब यहाँ पे कर लेते हैं, और उसके दौरान हम अपना प्लैब का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, और इससे ये होता है कि हमारा FY1 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो FY2 है वो हमें करना पड़ता है। या फिर हम किसी ऐसी फील्ड में चले जाएं जिसके लिए FY2 की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ट्रेनिंग जॉब डायरेक्ट भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप फॉरेन MBBS के बाद जाना चाह रहे हैं, तो आपकी एक तो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो आइल्स का स्कोर है उसमें 7.5 ईच चाहिए, ठीक है। मतलब रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग 7.5 ईच।
तो इसलिए मोस्टली लोग जो है वो FY1 को एग्जाम करवा के FY2 के लिए जाते हैं, जिसमें आपको आइल्स का स्कोर 7 ईच चाहिए। ठीक है, ओके तो वो ओके जी। जी जी जी। तो जो हमारा ये आइट्स के अंदर जो एक पोर्शन है जिसमें आप कह रहे हैं लिसनिंग होता है, व्हाट इज इट अबाउट? लाइक इसमें एक्सेंट्स आपने देखने होते हैं या सिर्फ आपने सुनना होता है और बताना होता है कि ये है ये चीज? वो आपको एक पेपर देंगे जिसपे ओके क्वेश्चंस होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, ओके आप मतलब क्या कहते हैं अपना अ, वो लिसनिंग चलती रहेगी, एक कॉन्वर्सेशन चलेगी, डायलॉग चल रहा होगा पीछे। ठीक है, और आपने सिर्फ उसमें उसका सुनना है और क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली उसका आंसर करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है। और जो लोग अभी अब आपने बात की थी कि सर्जरी में थोड़ा ना मुश्किल होता है प्लैब के लिए सर्जरी को मतलब अप्लाई करके उसको ज्वाइन करना, उसमें मिलना आपको सीट। तो मतलब जो लोग सर्जरी में जाना चाहते हैं, जैसे आप अभी एमओशिप कर रहे हैं मेडिसिन में, उनको एमओशिप सर्जरी में करनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू सेड राइट, या नहीं इसके अलावा कुछ है? नहीं करनी चाहिए नहीं क्योंकि हाँ, नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपका एमओशिप के दौरान भी सर्जरी का एक्सपीरियंस 24 माह का हो गया, तो क्योंकि 6 माह तो आपके हाउस जॉब वाले ही यूज हो जाएंगे ना, सर्जरी वाले। ठीक है, जी तो आपके पास एमओशिप में 18 मंथ्स हैं जो आप सर्जरी के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर आप उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो जा सकते हो, लेकिन कंसल्टेंटशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके सही है, यानी कि हाँ, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, तो फिर यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे मतलब मेरी तरह बैठ के इंतजार करें और एमओशिप करें। सही है सही है। मुदस्सिर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर प्लाइट? आपने प्लैब चूज किया तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई शुड वी प्रेफर प्लैब ओवर एमएलई? एक्चुअली मैंने प्लैब इसलिए चूज किया कि एमएलई के लिए एक तो मेरे पास ज़्यादा वो नहीं था, टाइम नहीं था। क्योंकि मैंने सर पहले प्लान यही था कि पाकिस्तान में रहना, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम देख के और हमारी हाउस जॉब के हालात देख के, तो इट वाज एन इजी डिसीजन टू टेक कि बाहर चले जाऊं। तो इसलिए फिर मैंने प्लैब जो है वो मैंने पहले बताया कि क्विक रूट है बाहर जाने के लिए एमएलई की निस्बत। एमएलई में आपको 2 से 3 साल चाहिए, आपको क्या कहते हैं कॉस्ट उसकी ज़्यादा है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात जो है, जो फियर फैक्टर मेरे लिए था, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मैच मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने प्लैब को चूज़ किया, क्योंकि प्लैब में थोड़ी सी सेफ्टी होती है, आप जल्दी सब कुछ कर लेते हो, और आपके पास ये होता है कि आपको कभी ना कभी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि आपका पेस का काफी डिफरेंस आ जाता है, एमएलई वाले हायर पेड होते हैं आप। स्टार्ट में तो सेम होता है, कंसल्टेंटशिप के बाद डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कंसल्टेंटशिप में जाके ऑब्वियसली उनकी पे ऑलमोस्ट आपसे डबल हो जाती है, लेकिन आप भी इतना कम मतलब पे ले रहे होते हो कि आप भी मतलब बहुत हैफ्टी अमाउंट देते हैं आपको, वो भूखा नहीं छोड़ते यूके वाले। सही सही। तो अच्छा, एक ये कहते हैं कि अगर आप सर्जरी के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको यूके में सर्जरी की सीट्स नहीं मिलेंगी, तो क्या ये ठीक है कि वो अपने ये ग्रेजुएट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब हमारे निस्बत अपने ग्रेजुएट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं सर्जरी की सीट्स के लिए? देखिए आप जब लैब कर लेंगे उसके बाद एनएचएस पे ना हर हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उनका एक क्राइटेरिया है। ठीक है, जिसके लिए स्कोरिंग है, हर हर चीज़ की स्कोरिंग है। जैसे कि हत्ता कि इस चीज़ की भी स्कोरिंग है कि आप अपने एमबीबीएस में मैथ्स मैनेजर रहे हो तो उसके भी स्कोर है। ठीक है, हाँ, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट आपकी अरे वाह। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स का स्कोर है। ठीक है, उसके बाद आपने रिसर्च पेपर किए उसका स्कोर है। फिर सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी का इंग्लिश एग्जाम लेती है 3rd ईयर या 4th ईयर में, आप देना चाहो तो दे सकते हो। अगर आप उसमें 60+ मार्क्स स्कोर करते हो तो 2 से 3 नंबर आपको उसके भी मिलते हैं। लेकिन ये सब मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, आपकी पहली जॉब के लिए नहीं। FY2 के लिए ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो उनका सारा क्राइटेरिया होता है और वो हर फील्ड के लिए डिफरेंट है। मतलब आप मेडिसिन में जाना चाहते हो वो डिफरेंट है, आप सर्जरी में जाना चाहते हो वो डिफरेंट है, आगे आप किसी सुपर स्पेशलिटी में जाना चाहते हो वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो जब मतलब अभी तो मतलब ये है कि आप लोग अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें उन पर। ठीक है, मतलब जो जो कर सकते हैं वो कर लें। पाकिस्तान में करना बहुत आसान है, टीचिंग टीचिंग के बहुत नंबर हैं, पाकिस्तान में करना बहुत आसान है, बाहर करना मुश्किल है। तो इसलिए जितनी आप अच्छी सीवी पाकिस्तान से बना के जा सकते हैं वो बाहर जाके मुश्किल बनती है। सही है सही है। So there is an over enthusiastic question. What can I do right now as a 3rd year medical student if I want to take PLAB?
what are the additional tests that I have to give for it in third year, okay? What things I can do right now that will increase my chances of being selected later on. Yeah, considering that we live in a society which imposes marriage on people after graduation, and for someone who wants to appear in an international exam like this, how can we maneuver our way around that? जो पहला पोर्शन था कि थर्ड ईयर में क्या करना चाहिए, तो वो सिर्फ फार्मा पे फोकस, ठीक है है। ना? बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपकी फार्मा, आपकी प्लैब में प्लैब 1 में फार्मा जो वो असेस होगी, तो आप अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको बेहतर करें। अभी आपको किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप लैब एग्जाम में अपेयर होना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्लैब एग्ज़ाम सिंपल एक बेसिक नॉलेज है जो आपने 5 साल पढ़ा है, ठीक है। तो वो आप दोबारा 3 माह में आपकी बहुत अच्छी खासी रिवीजन हो जाती है कि आपको दोबारा किसी चीज़ को और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अभी एज सच कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप अपना प्लैब एग्ज़ाम दे रहे हो और आप अपनी जॉब के लिए, जैसे अब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो साथ में अपना MRCP एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ठीक है। और वो भी, ये सारा कुछ जो यूके का सारा जो रूट है वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होता है, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, हमारे साथ जो जूनियर्स भी थे जो यूके से, बल्कि हमारे क्लास फेलोज जो यूके से आए थे, वो भी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रूट ये लिया कि उन्होंने FY1 वाला रूट ले लिया, मतलब हाउस जॉब उन्होंने जाके वहीं पे स्टार्ट की और वहाँ से उन्होंने वो वाला स्टेप लिया। हम जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ये करते हैं कि वो FY2 में डायरेक्ट जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले आप कुछ नहीं कर सकते एज सच। बस ये कर सकते हो कि आप अपने रिसर्च पेपर्स पे काम करना शुरू कर दो। आप अपने, जो मैंने आपको बताया है कि जिन चीज़ों के स्कोर हैं, BSc का पेपर है, आपकी क्या कहते हैं मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप किसी सोसाइटी में कोई काम कर रहे हो उसके सर्टिफिकेट्स हैं, उस सारी चीज़ों के नंबर हैं, आप उन पे मेहनत कर सकते हो इस टाइम। इसके अलावा आप जो एकेडमिकली कुछ नहीं कर सकते, आप एग्ज़ाम जो है वो MBBS पास करने के बाद ही दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये बताएंगे जब हमने पहला प्लैब 1 दे दिया या प्लैब 2 दे दिया है, दोनों में से एक, तो मैंने सुना है ना कि प्लैब 1 हम पाकिस्तान में देते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पाकिस्तान में देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने प्लैब 2 दे दिया है और वहां पे दिया है, अगर आई डोंट नो कि वो कहाँ पे देते हैं, तो आप वापस आ जाओ पाकिस्तान या वहीं पे रहो और लाइफस्टाइल अच्छा, एंजॉय करो? हाँ, नहीं, एक्चुअली ये है कि MLE की तरह आप कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं कर सकते प्लैब में, ठीक है। आप स्टेप वाइज आओगे, पहले OET या IELTS होगा, उसके बाद प्लैब 1 होगा, अगर वो पास होगा तो आप प्लैब 2 बुक करवा सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और प्लैब 1 आप दुनिया के किसी कोने में भी दे सकते हो, ठीक है, पाकिस्तान में दे सकते हो, किसी भी कोने में। जो प्लैब 2 एग्जाम है वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह पे होता है और वो मैनचेस्टर UK में, उसके अलावा आप कहीं नहीं दे सकते, ठीक है। तो प्लैब 2 अब इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि अकेडमीज काफ़ी बन गई हैं UK में, मैनचेस्टर में स्पेशली। तो आप वहाँ जाके, मोस्टली लोग ये करते हैं 6 वीक्स का टाइम, 6 वीक्स देते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, वहाँ जाके एकेडमी ज्वाइन करके और फिर प्रैक्टिस करते हैं, और 6 से 8 वीक्स में उनकी तैयारी हो जाती है और वो अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेते हैं, सिंपल। उसके बाद आपकी मर्जी है, मतलब इफ़ यू हैव दैट मच मनी इन योर अकाउंट यू कैन स्टे देयर एंड एंजॉय योर लाइफ, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन टू टेक। ठीक है डॉक्टर बिलाल, ये बताएं, क्वेश्चन है कि आयरलैंड क्योंकि पार्ट ऑफ यूके नहीं है एज फार एज आई नो, तो हम वहाँ पे प्लैब, जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं वो ले रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, दे आर गिविंग एडमिशंस टू देम, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को, तो वो विदाउट प्लैब कर रहे हैं, इज दैट ट्रू या ये सिर्फ एक रूमर है और इसका कोई बुनियाद नहीं है? आयरलैंड जो है वो सिंपल आपसे आपका MBBS डिप्लोमा और आपकी हाउस जॉब ये मांगता है, ठीक है। और साथ ठीक है। आपकी जो मैंने बताया था कि ECFMG से आपने अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है, वो मांगते हैं। उसके बाद जॉब वो आपको देते हैं, लेकिन आजकल जॉब मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आयरलैंड में, क्योंकि सैचुरेशन बहुत हो गई है। बहुत ज़्यादा। और इसलिए मतलब आयरलैंड में तो इम्पॉसिबल ही समझे। बाकी ये है कि पेज कंपेरेबल है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलना आपको ज़रूर मुश्किल है। फिर लोग ये करते हैं, ये रूट फॉलो कर लेते हैं कि आयरलैंड में रहते हुए प्लैब दे लेते हैं और प्लैब के थ्रू फिर UK में एंटर हो जाते हैं। ये रूट लोग मोस्टली फॉलो कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर बिलाल, पाकिस्तानी सब लोगों को बड़ा मुश्किल होता है वीजा के लिए ना, उसको मतलब आपका अप्रूव होगा, तो ये यूके के लिए भी मुश्किल है या नहीं? कोई इतना इशू नहीं है, आप हो जाए? मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए कहीं मुश्किल नहीं है मोस्टली।
ठीक है। ओके यूएसए वाले थोड़ा सा इशू करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन यूके में मेरा 2 दफ़ा वीज़ा लगा और कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है। आपको बस ये है कि जो वो चीज़ आपसे मांगते हैं, एक तो आपकी रीज़न टू विजिट यूके, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर आप मतलब जाना चाह रहे हो यूके और आप उनको डिपेंड कर रहे हैं आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो। अगर तो आप मोस्टली लोग ये शो करते हैं हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप यूके में जब भी वीज़ा अप्लाई करोगे आपको 6 मंथ से कम का नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है। ओके तो लोग 2 मंथ्स का शो करके, थोड़ा बैंक बैलेंस शो करके लंबे अरसे के लिए चले जाते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी है हम, हाँ ठीक है। पता तो है। और ये अच्छा रूट है, क्यों? क्योंकि मतलब ये है, लेकिन जो वो गाइडलाइंस है उनकी ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जितना बैंक बैलेंस है उसका 1/4 जो है वो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए ट्रिप की। आपके अकाउंट में इतना बैलेंस हो, मतलब अगर आपका 10 लाख लगना है तो आपके अकाउंट में 40 लाख पड़ा हो। ठीक है। तो इसलिए फिर सही है। लोग ये वाला रूट फॉलो करते हैं कि 15 दिन शो करके 2 माह 3 माह 4 माह जितने रह के आने, बेशक 6 माह पूरे रह के आ जाए तो उन पे है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये बताइए कि ओईटी के लिए आप कोई एकेडमी या कुछ ऑनलाइन साइट कुछ रिकमेंड करेंगे कि आप ये ज्वाइन कर लेगा आप कुछ भी? ओईटी के लिए आप क्या कहते हैं, अकेडमी ज़रूर हैं, और हम्म, ऑनलाइन भी लोग टीचिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन इसके लिए डिफरेंट साइट्स भी हैं जो आपका टेस्ट ले लेते हैं या आपके लेटर्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं। ठीक है। हम्म, तो आप उनसे अपने प्रिपरेशन का लेवल चेक करवा सकते हैं, लेकिन जो मैंने रूट फॉलो किया था वो ये था कि मतलब यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। एक चैनल है E2 लैंग्वेज के नाम से। ठीक है। उस पे मतलब उसकी सारी वीडियोस हैं, आप उसकी साइट पे जाके एक फ्री अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है। उसमें आपको वो कुछ टेस्ट भी दे देगा। और सिंपल ये है कि आपकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे 1 से 1.5 माह में आप मतलब प्रिपरेशन आपकी पूरी हो जाती है कि आप कोई एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है। डॉक्टर बिलाल, हमारे से एक क्वेश्चन और है कि अगर आपके पास यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, और आप ना इतना सेव नहीं कर सकते, तो आप लैब के लिए लोन ले लो। ये बात मतलब फीजिबल है, फिर रियलिस्टिक है या नहीं? लोन लेने से बेहतर है कि आप किसी भी अपने लाइक फादर की आप बैंक बैलेंस शो कर सकते हो। ठीक है। साथ आप उनके सपोर्टिंग लेटर दे सकते हो कि लाइक माय फादर इज स्पॉन्सरिंग माय विजिट टू यूके। ठीक है। ठीक है। तो तो मतलब कोई यानी भी जो अगर जी, अगर हम्म, लेकिन कोई भी अगर ऐसा नहीं है ना, मतलब अगर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, यू आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्टेबल कि आप किसी का भी अकाउंट शो कर सको, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? लोन ले लें, और अगर ले लें तो मतलब उसको वापस करने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स। देखिए जो अप्लाई मांगता है आपसे कि 3 to 6 मंथ्स की आपकी वो जो वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगते हैं, अकाउंट डिटेल्स, वो 3 से 6 मंथ तक आपके पास वो बैलेंस पड़ा हो। ठीक अच्छा। है। तो उस जो उनकी लिमिट आपने उनको शो करनी है वो 3 to 6 मंथ्स वो अकाउंट में आपके पड़ा हो अनयूज्ड। ठीक है। अगर ठीक है। यूज भी हो रहा है तो वो इतना नहीं हो रहा, वापस अपनी जगह पे वापस आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको लोन ठीक है। लेना पड़ेगा तो आपको 3 से 6 माह पहले लेना पड़ेगा, आपके यूके विजिट से 3 से 6 माह पहले। ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज़, हाउस जॉब में आप इतना अर्न कर लेते हो कि आप अपना जो प्लैब 2 का जो है आई थिंक आप अपना वो कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते सही। हो। अगर नहीं तो आप 3 से 4 माह में एमओशिप के दौरान अपना इतना अर्न कर लेते हो कि आप अपना प्लैब 2 के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हो अपना ट्रिप। ओके। सो ओके। सो लोन लेना कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं होगी। एज कम्पेयर आप ये कर लें कि आप कुछ देर के लिए वेट करें, जॉब करें, पैसे इकट्ठे करें और फिर चले जाएं। तो डॉक्टर बिलाल, एक बात बताएं कि आपने प्लैब क्यों चूज किया, मतलब यूएसएमएल क्यों नहीं चूज किया? अमेरिका आपको नहीं पसंद था या अमेरिका वालों को आप नहीं पसंद थे? व्हाट वाज इट? एक्चुअली अमेरिका मुझे तो पसंद था, मुझे ख्याल है उन्हें उन्हें मैं पसंद नहीं था। लेकिन एक्चुअली मैं बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो मेरा फियर फैक्टर ये था कि मैच नहीं मिलता मोस्टली लोगों को। ठीक ठीक है। है। तो ठीक मतलब मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन ये है कि अ, ये एक फियर फैक्टर मेरे लिए बहुत बड़ा था कि अगर मैं 2 से 3 साल मेहनत करूं, बैठ के पढूं रोज से 12 से 14 घंटे रोज पढूं, और उसके बाद मुझे मैच ना मिले तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होगा मेरे लिए। तो इसलिए फिर पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि मैंने डिसीजन लिया ग्रेजुएशन के बाद। तो है। ग्रेजुएशन के बाद 2 से 3 साल आपका बैठना विदाउट जॉब, और फिर सारा पीयर प्रेशर आप पे होता है। तो फिर जिसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं वो बैठ सकता है, वो कर सकता है। जिसको
टेंशन पड़ जाएगी कि मैं पीछे रह गया हूँ या मैं नहीं कर सका, मैं ये कर लिया वो कर शादी लिया। नहीं होगी मेरी। शादी नहीं भी चले, शादी के साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जो इजी रूट है वो प्लैब है ऑलवेज। ओके सही। अच्छा, तो आपने एक टीचिंग का कहा था कि हम टीचिंग से बस, तो हम फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे अपने मतलब टीचिंग थ्रू अपना पोर्टफोलियो इंप्रूव कर सकते हैं? इसमें मैं हाउस टिप्स जॉब, दे सकती हूँ बहुत अच्छी, बाद में। हाउस जॉब में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो वार्ड में, ठीक है। ओके ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं उनको वैसे जो राउंड के बाद जब वो वार्ड में विजिट करेंगे आपको, तो आप उनको कोई सा भी केस पढ़ा सकते हो, ठीक है। ओके लेकिन उसका ये है कि आपके पास कोई रिटर्न, आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो हाँ। कि हाँ ये मैंने काम किया है, तो वो प्रेजेंटेशन का तो आपको मिल सकता है आपके प्रोफेसर या जिसकी भी तरफ से, लेकिन जो आप वैसे उन पे टाइम लगाओगे उसका आपको शो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन आप जरूर मेंशन जरूर कर सकते हो अपनी सीवी में कि मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है। ओके और कितनी रिसर्च हम कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च हम करके अपने पास रख लें कि 3 4 5 जो उधर मैटर करती है? जितनी मर्जी कर लें काम। अच्छा सो डिफरेंस क्या है यूके एमएलई और प्लैब में, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बातें बताई हैं उनके अलावा? यूके एमएलए, द वन यू सेड अर्लियर, एक्चुअली इसका अभी आपने। तक ना तो उसका कोई सिलेबस आया है, अच्छा। ठीक है? अभी 3 साल पढ़े हैं ना, उसका कोई एज सच एग्जाम स्ट्रक्चर आया है, तो ठीक है। इसलिए अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी वो यही है कि इट वुड बी प्रीटी मच सिमिलर टू प्लैब एग्जाम, दैट्स ऑल। मैंने ये सुना है डॉक्टर बिलाल, मैंने ये सुना है कि यूके एमएलए जो है ना, वो उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए होगा, जैसे कि ना मतलब हमें कोई इशू नहीं होगा उससे, एज हम जितने भी फॉरेनर्स जा रहे हैं वो उनके स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। मतलब सिर्फ डिफरेंस ये है कि दे विल अप्लाई इट फॉर इट टू, और हमें उसमें कोई कुछ नहीं करना। नहीं, बिल्कुल आपको भी यूकेएमएल, जब यूकेएमएल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हम्म। आपको भी यूकेएमएल ही देना पड़ेगा, प्लैब नहीं नहीं, खत्म देना हो। पड़ेगा, लेकिन वो सेम होगा, मतलब प्लैब और यूके हाँ एमएलए जी, हमारे फॉरेनर्स के लिए बिल्कुल सेम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनको भी यूकेएमएल में अपीयर होना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि डाइवर्सिटी आ जाएगी थोड़ी सी एग्जाम में। हो सकता है कि अपने ग्रेजुएट्स की वजह से वो थोड़ा सा एग्जाम मुश्किल भी कर दें, ठीक है, लेकिन अच्छा। आज सच जो एक वो सिंपल एक उनकी मेथड है एग्जाम का, वो वही रहेगा। वो आप एमआरसीपी में बैठ जाएं, प्लान में बैठ जाएं, या आप आगे कोई भी अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के एग्जाम में बैठ जाएं, वो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं, बस ये कि डिफिकल्ट लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाता है, बस और कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, मतलब हमारे लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ठीक है। ऑब्वियसली अच्छा। वो हर जगह बढ़नी है आगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हमें वीजा के लिए कब अप्लाई करने का मतलब सोच लेना चाहिए, पेपर वर्क कब शुरू कर देना चाहिए, होमवर्क वगैरह? मैक्सिमम 3 months बिफोर योर विजिट टू यूके, मैक्सिमम 3 months. ठीक है। Because after applying for visa, you can get your visa in 15 to 20 days. Uh, and I told you that they will give you visa for 6 months. So it's like it's a right decision to apply 1 or 2 months before your visit to UK. ओके, एक और बात किसी ने पूछी हुई है कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल व्यू कि आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, आप थोड़ा इजी हो जाता है ना सर्वाइवल और लिविंग स्टैंडर्ड, क्या मतलब एक्सपोजर में भी डिफरेंस है कि आप जो सीख रहे हो उसमें कोई डिफरेंस है पाकिस्तान में और इंग्लैंड में? मतलब ये तो मैं पता है ना कि टेक्नोलॉजी वहाँ बेहतर है, ज्यादा है, ओके, वो बड़ा पॉइंट है। ऑब्वियसली मेरी जो मेन रीज़न है मतलब पाकिस्तान से जाने की, वो यही है कि यहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। अ, अभी आपको नहीं समझ लग सकती क्योंकि आप लोगों ने हाउस जॉब नहीं की हुई, ठीक है। हाउस जॉब में जब आप जाएंगे तो यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। मैं मेडिसिन मेडिसिन मेरा पैशन है, तो मेडिसिन में जब मैं स्टार्ट में गया हूँ तो मतलब आपको ऑलमोस्ट रोज़ डेथ सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं तो कहूँगा ज़ीरो है। तो आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है। वहाँ पे ये है कि सिस्टमेटिक अप्रोच है, आपके ऊपर हर टाइम एक सीनियर है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम साथ साथ पास करने पड़ते हैं, और आपका जो नॉलेज है वो रिफ्रेश होता रहता है बार बार, आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करती रहती हैं, इसीलिए वो आपसे बेहतर हैं, ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो आपको ऑन करते हैं बाद में, मतलब जैसे FCPS में आपका जो पासिंग रेट है वो 2 से 3% से ज़्यादा नहीं हो रहा,
ठीक है। लेकिन जी। जो FRCP में है वो आपको 80 to 90% पासिंग रेट भी मिल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पे इतना वो है कि आप ट्रेनिंग के बाद इतने कॉम्पिटेंट हो जाते हो कि आप उनका एग्जाम इजीली पास कर लेते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बता दें कि जब हम हाउस जॉब कर रहे होते हैं, जैसे हमारी भी फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे इंशाल्लाह, जब भी हो जाएंगे तो, और हम पास हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को कब ये करना चाहिए कि इंशाल्लाह, तो हम लोगों को कब ये अप्लाई कर देना चाहिए फ्लैप के लिए? ड्यूरिंग हाउस जॉब का क्या टाइमिंग रखनी चाहिए, मतलब कौन से ड्यूरेशन में हमें हाउस जॉब कर लेनी चाहिए? देखें अभी तो टाइम लिमिट की वजह से इशू हो सकता है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग 1 साल से OET पास करके बैठे हैं लेकिन उनको प्लाई 1 की सीट नहीं मिल रही। ठीक है। तो जब OET की टाइम लिमिट मैंने आपको बताया 2 साल है, तो ये इशू जी। ज़रूर हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मतलब जैसे अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, कोविड से हम निकल आते हैं अल्लाह करे, तो उसके बाद जो है वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी आप अपना प्लाई 1 निकाल सकते हैं आपको उतनी जल्दी निकाल लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद हाउस जॉब के फ़ौरन बाद आप प्लाई 2 के लिए जाएं। प्लाई 2 के बाद आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी कर सकते हैं आपका उतना टाइम कम वेस्ट होगा। बाकी ये है कि अभी भी मैं यही कहूँगा कि बेशक कोविड है, लेकिन आपको प्लाई 1 की सीट बुक करने के लिए OET या IELTS एग्जाम चाहिए। तो आप जितनी जल्दी OET या IELTS एग्जाम पास कर लेंगे वो उतना बेहतर है। और क्योंकि जब भी प्लाई 1 की सीट मिलेगी आपको फ़ौरन उठानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास OET या IELTS ही नहीं है तो आप प्लाई 1 की सीट किस टाइम लोगे? ठीक है, तो इसलिए बेशक आप फ़ौरन इसके MBBS के बाद और हाउस जॉब के दौरान 2 से 3 माह होते हैं, उसमें आप अपना OET निकाल सकते हैं। और उसके बाद जब भी आपको प्लाई 1 की सीट मिले हाउस जॉब में, आप कभी भी दे सकते हैं। यानी कि हाउस जॉब कंप्लीट करना जरूरी नहीं है? प्लाई 1 के लिए ज़रूरी नहीं है, प्लाई 2 के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। मुदस्सिर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, I haven't any question. Okay. So with this, thank you so much, Dr. Bilal. With this, we bring our webinar to an end. We would like to once again, thank you, Dr. Bilal. You have really been a help to us. और आपने बहुत ज़्यादा अपना time दिया. You have been really cooperative with us. बहुत बहुत शुक्रिया. Dr. Usman has left us earlier, but thank you so much, Dr. Usman. To you too. I hope you all gained something from this webinar and will continue to lend us our support and our time as we strive to bring more of these guidance webinars. On the prayer that may Allah Pak accept all our fasts and yours too, obviously. This is Shireen Al-Shirazi with Mudassir Awan, wishing you a happy Eid in advance, and Allah Hafiz. Thank you so much for joining in. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Thank you Hafiz. so much.